We are live. Johar Zindabad to everyone present with us, both on the Zoom and on the live. We are together yet again for another session of युवा संवाद. आज हम एक बार फिर से युवा संवाद के एक और सत्र के लिए इकट्ठा हुए हैं. युवा संवाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक सीरीज है जहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते देश के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न स्ट्रगल्स के साथ जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों के पर काम करते हुए युवा हमारे साथ जुड़ें और हम तक उन मुद्दों की असलियत पहुंचा सकें. हमसे एक वार्तालाप एक लगातार चलता रहे और हम आपस में एक दूसरे को अपनी सॉलिडारिटी दे पाएं और उन मुद्दों को उन्हीं लोगों से समझ पाएं जो सीधे तौर पर उनसे जुड़े हुए हैं. So, Yuva Samvad is a series started by NAPM to have a dialogue across with youth of from different regions, different connected with different struggles and movements, and establish a dialogue, a continuing dialogue about the different issues that have been there and continue to be there, and basically understand from them, the realities of different of various of these struggles. So in the past few months, we have been having dialogues on different books of life, like be it work and employment in relation to youth, or having a dialogue about the feminist futures that we imagine. And this whole month has been dedicated to remembering some of the revolutionaries and figures who have shaped our history in a certain way, whose inspirations we keep on drawing, whose ideals we keep on drawing inspiration from, and like they continue to form the basis of our struggles. तो जो पिछला एक महीना है ये हम बिता रहे हैं, जो अप्रैल का महीना है ये हम बिता रहे हैं उन सभी क्रांतिकारी लोगों को याद करते हुए, जिन्होंने हमें अपने विचारों से और अपने काम से हमारे मूवमेंट्स को शक्ति प्रदान करते हैं, जिनकी आइडियाज़ को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और जिनके आइडियाज़ आज के समाज में भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने वो उस समय थे जब वे इस दुनिया में थे. तो उसी घड़ी में हमने याद किया सावित्रीबाई फुले को, अंबेडकर को, पेरियार को, फातिमा शेख को, और आज हम इकट्ठा हुए हैं कुछ आदिवासी रेवोल्यूशनरीज और फिगर्स को याद करते हुए, चाहे वो जयपाल मुंडा हो, बिरसा मुंडा हो, सिद्धो कानूमुर हो, या फिर फूलो झानो मुर्मू हो, रानी गार्डन लियू हो. तो इन सभी रेवोल्यूशनरीज को याद करते हुए और ये देखते हुए कि उनके विचार कैसे आज के मुद्दों से भी जुड़े हुए हैं, आज के समाज में भी हमारे लिए रेलेवेंस रखते हैं, और कैसे हम उन मुद्दों से इंस्पिरेशन आज भी ड्रॉ करते रह सकते हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास आज हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से साथी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ आप आज की बातचीत सुनेंगे. आज की बातचीत को मॉडरेट करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशीष खाखा मौजूद हैं. Dr. Ashish Khaka is an assistant professor with the Department of Humanities and Social Sciences in IIT Gandhinagar. He obtained his PhD in Development Studies from TISS Mumbai, where he was an ICSSR doctoral fellow. His broader research is on the urbanization and changing cityscapes of India, focusing on the unexplored aspects of equity, governance, and social justice. His PhD examined the development of tribes, indigenous peoples of central and northeast India, with special reference to urbanization, constitutional and legal provisions, development issues, land tenure systems, local governance and democracy, alienation and deprivation from a comparative perspective. आशीष खाखा डॉक्टर आशीष खाखा ने हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज आईआईटी गांधीनगर में ज्वाइन किया है और वे आज की बातचीत को मॉडरेट करेंगे. आई हैंड इट ओवर नाउ टू डॉक्टर आशीष हु वुड टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड. Thank you so much, Shiva. Am I audible to you? Yes, yes. Okay. Thank you so much, Shiva. और सभी साथियों को जोहार. Good evening and welcome to all to this very important dialogue. So आज का ये जो सेशन है इसको हम एक bilingual mode में हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे. So we'll have conversations both in Hindi and in English so that people from both languages are comfortable with it. तो सबसे पहली बात, जब मीरा ने मुझे इनवाइट किया था आज के इस टॉक को मॉडरेट करने के लिए, आई वाज थिंकिंग हाउ कैन आई sort of be an anchor to a very wide spectrum of issues of
problems and struggles that the Adivasi, the tribal, the indigenous people of this country have faced. So बहुत विभिन्न तरह के समस्याएं हैं, problems हैं, issues हैं, और वो आज के ही नहीं, वो बल्कि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से उनको हमने देखा है। तो मैं इस बात पे मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं बस एक इन अ वे यादगार की तरह से मैं इसको शुरू करना चाहूंगा कि जब से हम अगर हम इतिहास की किताब पढ़ते हैं, इफ वी रीड हिस्ट्री बुक्स, वी ऑफन कम अक्रॉस यू नो like very big names like Gandhi and Tagore and Nehru, लेकिन और एक बहुत ही जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बोला जाता है कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया वाज फॉट इन 1857। ये एक हिस्टोरिकली रॉन्ग फैक्ट है, क्योंकि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट 100 years before that in 1757 by an Adivasi man called as Tilka Maji. So he is the first freedom fighter of this country. और उसके बाद बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए हैं जो which were led by various revolutionaries। उसमें से कुछ कुछ नाम है: सेरेंगासी वाली वॉर, संथाल रिवोल्ट, खेरवार agrarian movement, and finally the बिरसा मुंडा मूवमेंट, जो एक जिन्होंने एक जो जो ब्रिटिश राज था उसको काफी हद तक हिलाया था। और उसके बाद में there were several laws that were drafted such as the CNT and the SPT Act, which also came about as a result of those movements and of those protests। और उसमें भी मतलब हम देखते हैं कि जब हम ऐसे instances को देखते हैं, so we often forget, it often becomes a sort of a male dominated narrative, लेकिन उसमें बहुत सारे female Adivasis and female Dalit freedom fighters का भी उतना ही हाथ रहा है। उसमें से कुछ कुछ लोगों का नाम है: हेलन लेप्चा है, रानी गांडिल्यूई है, and there are several other people जिनके बारे में हम नहीं सुनते हैं। लेकिन आज अगर हमको ये मौका मिला है एक हिस्ट्री को याद करने का, उसको हमको उसके कॉन्टेक्स्ट में आज के बातों को रखने का, तो मैं एक फ्रेमवर्क सेट करना चाहता हूं, जिसके बाद हम सारे स्पीकर्स के बाद जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में आदिवासी इश्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ट्राइबल इश्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई आदमी था तो वो था जयपाल सिंह। उन्होंने बहुत सारे प्रपोजल, बहुत सारे सजेशंस रखे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में, जिसमें से बहुत सारे प्रपोजल्स को खारिज किया गया था, उनको रिजेक्ट किया गया था उनमें। और डॉक्टर अंबेडकर में भी काफी सारे बहस हुई थी, जिन्होंने, और डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारे सजेशंस उनके नहीं लिए थे। ये भी एक ऐतिहासिक फैक्ट रहा है। जैसे कि for instance the word Adivasi itself, Jaipal Singh had proposed for the word Adivasi to be included as part of the Indian Constitution, and that had been negated in favor of the term scheduled tribe। तो ये अगर हम पढ़ते हैं कि जो टर्म्स रहे हैं, जिनको पहले खारिज किया गया, और इसकी वजह से आज अगर हम यूएन में जाते हैं, if we go to the UN today and we say that we are the indigenous people of India, so the UN turns back and says, but there is no mention of the term indigenous or tribe in the Constitution of India। ये बहुत ही एक historical in a way एक historical glitch रहा है। और आज के डेट में हमको, we as the youth, or it is in our hands that how do we take this struggle forward, this movement forward। तो मैं इतना ही कह के I would step back for now, and I will invite the first speaker, जो हमारे साथ जो हमारे पहले दोस्त हैं, रोहित पडियार। Rohit Padiyar hails from Alirajpur, a tribal dominated district of Madhya Pradesh, जिनके खुद के फैमिली सरदार सरोवर डैम से विस्थापित हो गए थे। वो आदिवासी इश्यूज पे काफी आवाज उठाया है, और उन्होंने जो आदिवासी रेवोल्यूशनरी से उनकी याद में काफी सारे सॉन्ग्स
कंपोज किए हैं लोकल लैंग्वेज में, ताकि वो जो आम आदमी तक वो बात पहुंच सके, एंड so that the people are aware of the various struggles that have been um, um, uh, there in this process. So Rohit, if you're there, you can please unmute, and or if he's lost connection, then maybe we can go to the next speaker. Shiva, can you see him? I think Rohit वो disconnect हो गए शायद. हाँ शायद डिस्कनेक्ट हो गए. मे बी हम अभी नेक्स्ट स्पीकर के साथ चल सकते हैं. Yeah, I coordinate with Rohit and tell me. ठीक है, then okay. Till the time being he reconnects with us, we can go to the next speaker. So I request Advocate Sushma to kindly switch on her video, and I'll just give a brief introduction about her. Advocate Sushma Gumpenapalli is from Bhadrachalam, Telangana. She graduated from Nalsar, which is in Hyderabad, and is currently a practicing advocate at the Telangana High Court Hyderabad bench. And she is also the co-founder of a new initiative called Spectacular Girls. So with that brief introduction, I hand it over to Sushma. Sushma, please, the floor is yours. Thank you. Am I audible? Hi, good evening to all of you. I'm Sushma. Thank you, NAPM, for this opportunity, especially Meera. Thank you so much. Also, thank you, Dr. Ashish, for the introduction. So today I'm here to discuss few Adivasi issues and struggles in Telangana and Andhra Pradesh, because it was erstwhile United Andhra Pradesh, as all of you know, and other issues about women and the students' role in those struggles and the challenges. I'd like to broadly build a framework owing to the time constraint that must be respected, so that we can further this conversation based upon the questions and the comments thereupon. Is that okay with all of you? Yeah. So firstly, I wanted to talk about the social identifications, as we're trying to organize ourselves more under the democratic principles of the Indian Constitution. So speaking of the social identifications, I'd like to, probably we all also must be speaking about the term called as consciousness. Am I audible? I'm sorry. Yes, Sushma. Yes. Yeah, okay. So speaking from a Marxist point of view, this how these how do we put this term consciousness into the context of our gathering today? I wanted to drive your attention to the term false consciousness, probably, as in speaking about the social identifications and the false consciousness, how our social identifications shouldn't fall into the peril of the false consciousness. For the purpose of references, I'd like to quote Engels, like what he said about the false consciousness. According to Engels, I've written it down, I'll read it out, okay? It's some kind of a political and social identity which is espoused by certain classes that aspires for the goals that do not benefit them, or also that don't even serve the purpose of the social organizations and the identifications. So this is the broader framework that I would be looking into, because the more we organize ourselves and the more we look into for the solidarities, or we should be little careful as in how we're getting isolated, or how our allies should be, how our solidarities should be, or else the entire purpose of our social identification would be under the peril of being misidentified, or it would be under probably it could be counterproductive.
So I just wanted to speak about false consciousness and the social identifications. So if you can further go on in your comments and the questions before I go into this next topic, as in the second framework which I'm looking into. So the second one, as in from the framework, I would like to explain the framework that I've put forward. How the false consciousness could be very inimical to the social identification itself. So, for example, we identify ourselves as Adivasis or also the indigenous populations, or there could be other terms. For example, in Telangana, there are also other groups of people who call themselves as Girijans. I don't know how many of you are familiar with this, but there are other forms of social identifications, and there is also a term called as Moolivasi. Few people prefer themselves to be called as Moolivasi. Yeah, so these are the social identifications that I wanted to flag out. So now, how do we see the false consciousness being built into these identities? Is I picked up one example, that is Hinduization. Excuse me. Yeah. This is Hinduization. So I would want to speak about the cultural appropriation that is very much evident in the Telangana and Andhra Pradesh regions. Okay. Yeah, so the cultural appropriation per se, it just didn't start with the advent of the Hinduization, but a larger kind of appropriation started during the census, where Adivasis were termed or were clubbed under the category Hindu. As most of you are familiar about the census collection and how they are categorized as Hindus. But the real problem lies in where the Hinduization seeps too deep culturally and organically. So I would like to broadly discuss how this cultural assimilation and also the ethnocentrism would hamper the social identity through Hinduization. So I'll go into few cultural festivals that are celebrated in Andhra Pradesh, the erstwhile Andhra Pradesh, focusing on Telangana. Yeah, so I'm preferring the word celebration instead of festival. Probably, I mean, this is what my understanding goes into. Celebration is kind of, where you celebrate as equals, but whereas the festivals, the term festivals itself has some kind of devotional connotations, and it also kind of introduces the power asymmetry, if I'm not wrong. This is up to my understanding. So I'm preferring to use celebration categorically. Yeah, so the first celebration I would like to talk about is the Navaba Jatara. We call it. It's celebrated in Adilabad. This is a district in Telangana. This is one of the largest conglomerations. I mean, the largest conglomerations, the largest celebrations, and it's very popular in Telangana region. So this is celebrated by a sect or a community from the Koitur. I can write down what Koitur is in the comment section later on. Yeah, this is like a larger conglomeration of many Adivasi identities coming down in the southern Deccan region. You call it Koitur. Yeah, so there's a sect, or you call it a community called as Bones, and they celebrate this, and a particular family celebrates this Jatara. So yeah, this is the kind of celebration which the people come together to recall or retell their histories, or pass on. It's like an oral tradition you pass on to generations. So this is the largest gathering that's been often spoken in Telangana. And the other kind of such celebration is the Sammaka Saraka Jatara. This also happens in Telangana. These are the two largest celebrations that are often spoken about. So why is it so important for us to speak about these celebrations? This is because I'm speaking about the culture, the false consciousness, and the relation between the culture, false consciousness, and the Hinduization. Let us now see how these celebrations have been under the influence of Hinduization, and how the assimilation, cultural assimilation, and how ethnocentrism is seeping inside the communities, the Adivasi communities. Okay. Yeah. So yeah.
Yeah, I have written it down. One interesting observation is that in the both now that the celebrations are commercialized, earlier it was very much of a community based celebrations, but now that they're very much commercialized, there is a lot of inflow of money and outflow of money from the state, from the NGOs, from the political authorities, who now it is not much of a community celebration. It has almost become like a very less of a community celebration, or less of a very commune based celebration, and it's very much of commercialized. So one interesting, it's not very interesting, it's of course pathetic, but I'm just saying it's interesting for me to observe that there is there is one introduction of a new profession into the Adivasi communities, that is sex work. Sex work is introduced through these celebrations to the Adivasi communities. So I want to give you a rider about this too. The debate of sex work by choice is entirely different, and one should not stigmatize the profession on moral connotations. But it is very important and pertinent for us to observe how sex work is introduced into the Adivasi villages. One has to remember that the sexual liberty and autonomy is deeply rooted into the fabric of Adivasi communities and Adivasi cultures. But how does sex work through these festivals give rise to subordination of woman identity? And how the outsiders, the majority client base of the sex working women, is now a means of recreation or a erotic pleasure, and it's like and they've introduced a commodification of bodies which never existed. I mean, which didn't exist mostly in the Adivasi or the indigenous communities. That is what I'm looking into. As far as my understanding goes, the Hinduization or the Brahminization event introduces and appropriates the celebration of the festivals, thereby replacing equality with the power asymmetry. This is again a stunt for the subordination. We'll look into the details. Yeah. So through these festivals, what they do, and yeah, just give me a moment. I'll just come back. Yeah. So I'll continue with the sex work thing. Speaking of the sex work, it is not just the sex work that is created as a category for the pleasure of the outsiders. We must also speak about how the sexual autonomy, which was in the Adivasi culture earlier, was replaced with the sexual subordination into the families of the Adivasis, and sexual exploitation is made very easy to the hegemonic communities. One cannot equate, of course, the sex work with the sexual exploitation, sexual abuse by any means. But what we need to address here is the sexual abuse, sexual exploitation, and subordination. For example, there is this GR Gurukulams in Adilabad district. This is the Adivasi region, and Chinnajiyar is I don't know what to call him. This person comes from a Vaishnavite shrine. This is mostly the it is a Vedanta philosophical branch. So this person is called as Chinnajiyar, and he mostly belongs to the Vaishnavite shrine, and he is a popular figure in I think this statue of equality. I don't know if it's popular with you, but this is a person who introduced Statue of Equality to Telangana and all. So this person is running GR Gurukulams in the Adivasi hamlets, and there is a practice of menstrual bleeding being treated as a taboo. So now how do we, I mean, it would be very difficult for us to prove that they're practicing this. For one reason, that it shall not be made public and internalized, the taboos would not be the victim to the groups, as in they wouldn't be speaking about it as a taboo, because that's the level of internalization that Chinnajiyar Gurukulams are doing to it. Okay. Yeah. Okay. Ashish says I have only 5 minutes, but I have 2 other points also to cover. Yeah. Okay. I'll just wrap it up then. Okay.
So for me, the broader understanding is that the subordination will give rise to, the patriarchal values and the patriarchal norms. Thereby, the women within the community not only face the sexual abuse or the kind of sexual subordination from the outsiders, it's also very inimical when you will have to face the same kind of wrath from your own community people, from within the community. That's the more dangerous thing that the Hinduization would probably do to the community. Second thing I would want to say is about the state. We spoke about the culture right now, but I would also like to speak about the state. Like I would like to call state as being the major violator of the Adivasi rights. Yeah, so I wanted to flag out about an issue in Indravalli. Indravalli is also a village in Adilabad district. So what happened in Indravalli is like it's very much equated to the Jallianwala Bagh massacre. But one interesting fact, one fact that has happened in the Indravalli is that everybody thinks that there is a gathering to speak about the Polo lands, and hence there was a state brutality. But one fact is that there was a group of Adivasi women who wanted to join the gathering, and they were pushed away by the police personnel with their hands placing them on their breasts. And that is when these Adivasi women hurt the police personnel with a sickle, and that was not taken in a proper way by the police personnel, and immediately hundreds of police men, they started opening fire. This is one such incident where the state wouldn't take the assertion of any sexual autonomy or the bodily autonomy. And the second thing, of course, I'll be talking about the UPA. UPA is one draconian law that is used to terrorize, even if it's a Markham case, or even if it is any tribal youth or any other things. There is one particular incident in the same district and the same village of Markham Hitme, where another girl, a very young girl, was mistaken for Markham Hitman. She was raped and she was killed. This is how the state also exercises its sexual, the sexual violation happens. I'll just wrap it up with one example how the UPA is very draconian. There is one tribal journalist from Karnataka. His name is Vittal Malakudia, and he was arrested in 2012. That was before my graduation. That was before I was into my law, and I came to know about the news recently that he was acquitted in 2021 under UPA. There are many other Adivasi people who are being arrested under UPA. But the most important part is that they are not in prison, but most of them are under trial, which means they're not even given an opportunity to be heard. They're still under trial. So the trial goes on, and then they should be acquitted. It takes almost 10 years. 10 years of jail life is not a it's a denial of human rights, if you ask me. Yeah, I wanted to speak about other issues, but I think I'm running short of time. These are the major issues I would want all of you to cover. Also, if someone wants to speak about the Polavaram project, the Indira Sagar multi-purpose project, which is also again an incident of displacement for the Adivasi peoples in Telangana and Andhra Pradesh, you could drop your comments or questions so that I can discuss. Yeah, Ashish. Thank you so much, Sushma, for a really an eye-opening presentation. I think it was quite poignant. So what we can do is I'll just briefly translate what you said in Hindi, and then maybe the rest of the 2 points which you wanted to say, maybe we can bring that out in like in the second round. So मैं अभी संक्षिप्त में मैं जो एडवोकेट सुषमा ने बोला है मैं उनको मैं बोलता हूँ. उन्होंने ब्रीफली बात किया जो एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस होता है, जो एक इंसान का एक कॉन्शियसनेस होता है, जो एक हमारा सोशल आइडेंटिटी, हमारा जो सोशल पहचान है. उन्होंने एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से उन्होंने एंगल्स को लेके बोला है कि जो सोशल आइडेंटिटी है वो फॉल्स कॉन्शियसनेस में नहीं जाना चाहिए. ये एक बहुत बड़ा चाहे वो गलती बोले, चाहे वो एक बिना सोच के हम लोग जब काम करते हैं कि हमारा जो एक आइडेंटिटी है, हमारा वो बहुत यूनिक है, और वो अगर हम गलत कॉन्शियसनेस में अगर हम पड़ जाते हैं, then it can have cascading effects. उसके बहुत सारे रिवर्स इफेक्ट्स
हो जाते हैं। और उन्होंने इसके लिए एक केस स्टडी लिया है तेलंगाना में कि किस तरह से कल्चरल अप्रोप्रिएशन हुआ है, किस तरह से आदिवासी समाज में जो एक एगालिटेरियन समाज था वो वहां पे एथनोसेंट्रिसिज्म आया है। she further takes it up with the case of the sex workers कि जो एक आदिवासी समाज में एक जेंडर इक्वालिटी कुछ हद तक था, वो इस हिंदुआइजेशन के बाद, कल्चरल अप्रोप्रिएशन के बाद किस तरह से महिलाओं को एक काफी नीचा दर्जा से देखा गया है। their bodies have been commodified, the whole sort of जो एक ट्राइबल सोसाइटी में एक जो एक इक्वालिटी होता था उससे काफी आगे जाके एक पावर एसिमेट्री में लाया गया है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं और इस पे हमको काफी गहराई से हमको इस पे हमको सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे ये जो मुद्दे हैं, ये जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, इसको हम कैसे इसको सुलझाएं, कैसे इसको इससे हम लोग आगे, इससे हम लोग बाहर निकलते हैं। और भी पॉइंट्स हैं सुषमा के बाद, लेकिन मैं उस पॉइंट्स को मैं अभी मैं राउंड 2 में लेके आऊंगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्पीकर, रोहित परियार। हेलो रोहित, कैन यू हियर अस? आप हाँ जी, मैं सुन सकता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। तो मैं आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको कर देता हूँ, फिर आप बोल सकते हैं। Rohit Padiyar hails from the Alirajpur district of Madhya Pradesh, which is a tribal dominated district। और उनके खुद के परिवार जो सरदार सरोवर डैम थे उससे स्थापित हुए थे। अभी वो गवर्नमेंट सर्विस में हैं और वो जो आदिवासी इश्यूज हैं उनको लेके वो बहुत एक्टिव है वहाँ पे। और वो जो ट्राइबल रेवोल्यूशनरी जो आदिवासी फ्रीडम फाइटर्स थे, रेवोल्यूशनरीज थे, उनके याद में उन्होंने काफी संगीत लिखा है लोकल लैंग्वेज में ताकि वो आम जनता तक पहुंच सके। रोहित, आपके पास 15 मिनट है। मैं 10 मिनट में आपको एक मैसेज भेज दूंगा 5 मिनट का। तो आप अपना बात को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहले तो यहाँ पर जुड़े हुए सभी साथियों को मैं हार्दिक जोहार प्रकट करता हूँ और मीरा जी का स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कि उन्हीं की पहल के थ्रू मैं यहाँ पर जुड़कर आया कि उन्होंने मुझे बोला कि युवा संवाद के थ्रू हम लोग जो है आदिवासी क्रांतिकारियों के ऊपर कर रहे हैं। तो इसमें जो है जो भी आदिवासी समाज से अलग अलग गतिविधियों से जुड़े हुए जो युवा है उनके विचार किस तरीके से रखते हैं वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और इसके अलावा जो पहले से जो देश के स्वतंत्र होने के पहले से जो भी हमारे क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया है, तो इसी के संबंध में मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मूलतः जो हमारे आदिवासी क्रांतिकारियों ने, चाहे वो बिरसा मुंडा ने हो या फिर टंटिया मामा ने हो, तिलका माझी है, तो इन्होंने जो संघर्ष किया वो था जल जंगल जमीन और जो कमजोर समाज है आदिवासियों का, उसके किसी भी तरीके से जो शोषण है वो ना हो पाए। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी जो लड़ाई है वो आज भी वही है। आदिवासियों का जो संघर्ष है, आजादी से पहले जो संघर्ष है, वो संघर्ष आज भी आदिवासी समाज करते आ रहा है। अगर देखा जाए तो जो आदिवासी है, तो शुरुआत में भी जैसे कि भगवान बिरसा मुंडा ने और टंटिया मामा ने और जो और भी जितने भी आदिवासी क्रांतिकारी है, उन्होंने क्या है कि मुख्यतः जो लड़ाई लड़ी है वो केवल ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के खिलाफ थी, वो बल्कि हर उस शोषणकारी ताकत जो हम लोग देखते आ रहे हैं, जो जिसके थ्रू क्या है कि समाज का जो कमजोर वर्ग है उस कमजोर वर्ग का शोषण होता है, तो उस हर ताकतों के खिलाफ वो संघर्ष किया जाए। और वही संघर्ष आज भी हमारे समाज में होता आ रहा है। आप देखेंगे कि जो पहले भी जो लड़ाई थी वो जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर थी, और आज भी हमारा जो आदिवासी समाज है वो उसी चीज को लेकर संघर्षरत है। आप देखोगे कि जो जितने भी, अगर आप इस भारतवर्ष में आंकड़े उठाकर देखेंगे तो उन आंकड़ों में आपको नजर आएगा कि
जो सबसे ज्यादा विस्थापित होने वाला जो समाज है वो आदिवासी है। और इसके अलावा अगर अपने जो जल जंगल जमीन है उससे अगर बेदखल होने वाला जो समाज है वो आदिवासी है। और अगर आप देखोगे कि पहले भी जो आदिवासी समाज है उसको अपनी जगह से बेदखल इन्हीं चीजों को लेकर किया जाता था। उस समय जो अंग्रेज थे वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा भारत के संसाधनों का दोहन करके अपने देश में लेकर जाना चाहते थे। तो एक तरीके से जो टकराव है वो वहीं पर स्थापित हुआ। अंग्रेज सीधे तो जंगल में घुसते नहीं थे, वो क्या करते हैं कि अपने बिचौलिया के माध्यम से जो भी साहूकार है या फिर जो भी बीच में जो बिचौलिया है, जो क्या है कि एक तरीके से मीडिएटर के रूप में काम कर रहे थे, उनको वहां पर आदिवासियों के बीच में भेजते थे। और जो आदिवासी क्रांतिकारी है वो इन्हीं चीजों को रोकना चाहते थे। आजकल जो बहुत से जो हिंदूवादी संगठन है वो एक एक तरीके के एक जो है कैंपेन चला रहे हैं कि जैसे जो आदिवासी योद्धा है वो किसी एक तरीके से धर्म योद्धा की तरह वो प्रकट करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जो आदिवासियों की जो लड़ाई है वो किसी समुदाय विशेष या जाति विशेष से नहीं है। जो आदिवासी समाज है वो केवल इतना ही चाह रहा है कि जो भारतीय संविधान जिसमें बाबा साहब ने और जो जयपाल मुंडा जी का जो योगदान रहा है, उन्होंने जो अधिकार दिए हैं केवल उतने ही अधिकार हमें दे दिए जाए। हम किसी को कहीं बेदखल करने की बात या फिर किसी से नफरत करने वाली बात हम लोग नहीं फैला रहे हैं। तो यही चीजें जो है क्या है कि एक स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा। मैं अभी पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ, जो लगभग 8-10 साल हुए, तो इसमें काफी कुछ बदलाव आया है। एक तरीके से हमको जो स्कूलों में जो एक तरीके से धर्मनिरपेक्षता को पढ़ाया जाता है और इसके अलावा जो भाईचारे की बात कही जाती है, तो वो वाली चीजें आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने को नहीं मिल रही है। एक समय था जब हम लोग कोई सा भी किसी भी धर्म का त्योहार होता है, चाहे वो मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का हो, हिंदू का हो, एक दूसरे को शुभकामना प्रेषित करते हैं। लेकिन आज जो है वो जो परिस्थितियां है वो बदल चुकी है। आज मैं देखता हूँ कि जो हमारे बहुत से मित्र है, जो चाहे वो गैर आदिवासी हो, किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, तो उनके हर प्रकार के जो उत्सव है उसके ऊपर शुभकामना संदेश आते थे, लेकिन वो चीजें आज आना बंद हो गई है। तो ये एक विचरणीय मुद्दा है कि ये जो परिस्थितियां है वो किस तरीके से निर्मित हो रही है। तो जहां तक मैं देख रहा हूँ कि एक जो भी गतिविधियां आजकल जो हिंदूवादी संगठनों के द्वारा की जा रही है वो सारी की सारी उकसावे के मकसद से की जा रही है। उकसावा क्या है कि किस तरीके से है कि आप देखिए विभिन्न प्रकार के उत्सव के नाम पर आप एक तरीके से जो भी सामने वाली कौम है उसको ललकारने वाले गीत बजाए जाते हैं। इसके अलावा जो है इस तरीके की नारेबाजी की जाती है, तो वो एक तरीके की सोची समझी रणनीति है। और इस चीज को जो है एक आदिवासी समाज को भी समझना होगा और इसके साथ ही साथ जो भारतवर्ष में जितने भी समुदाय रह रहे हैं यहाँ पर उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से वो लोग यही चाह रहे हैं, क्योंकि फिलहाल जो है एक तरीके से सत्ता में रहते हुए उनके पास काफी ताकत है और वो किसी ना किसी तरीके से बहाना ढूंढ रहे हैं कि जो एक तरीके से जिन कौम को वो अपना दुश्मन समझते हैं, तो वो किस तरीके से उकसावे में आकर कोई गलत कदम उठाए और उसका एक तरीके से उस कदम के आधार पर उसको एक बहाना बनाकर जो है जो पूरी की पूरी कौम को जो है तहस नहस कर दे, इस तरीके की जो साजिश है वो हो रही है। और इसके अलावा अभी जहां तक की जो विषय है वो क्या है कि जो आदिवासी संघर्ष है उस पर ये पूरी की पूरी जो समीक्षा या बातचीत रखी गई थी, तो उसके ऊपर मैं आकर कहना चाहूंगा कि जैसे बाकी देश के अंदर बहुत क्रांतिकारी हुए और सबका इस देश की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन एक तरीके से आदिवासी क्रांतिकारी के परिप्रेक्ष्य में जहां तक मैं मानता हूं कि बहुत सारे आदिवासी क्रांतिकारी जो है आज भी जो है इस देश में गुमनाम है। भले उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी, बहुत ही बड़ा लंबा संघर्ष किया हो,
लेकिन उनको वो दर्जा नहीं मिल पाए जैसे कि उनको मिलना चाहिए। आप देखेंगे कि एक तरीके से कितने आदिवासी होंगे जिनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता होगा। कुछ बिरसा मुंडा का नाम शायद जानते होंगे लोग। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि वो क्रांतिकारी राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है। हालांकि जो अभी फिलहाल जो हमारे वो सारे जो हमारे जैसे जागरूक अभियान है जिसके थ्रू क्या कि हम जो क्रांतिकारी के संदेश है उसको लोगों तक पहुंचाने काफी हद तक कामयाब रहे कि इतना तो बहुत कर इतना कुछ किया जो क्रांतिकारी है जैसे जयपाल मुंडा जी है हमारे संविधान निर्माण में और जो आदिवासी अधिकारों को दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिरसा मुंडा है और हमारे क्षेत्र से टंटिया भी है और इसके अलावा खाजा नायक है, भीमा नायक है, तिलका माझी है और इसके अलावा जो कोमराम भीम है। तो इनके मैसेज हम लोग ने एक तरीके से फैलाया और काफी हद तक जो है युवाओं के अंदर जागृति आई है। क्योंकि जहां तक मेरा विश्वास है कि जो हम लोग देश के अंदर बदलाव चाहते हैं और एक तरीके से जो बंधुत्व की जो भावना विकसित करना चाहते हैं और एक दूसरे को सम्मान करना, और अगर कोई व्यक्ति आपके विरोध में है और वो आपके विरोध में कोई तर्क पेश कर रहा है तो उस तर्क को सहने की जो शक्ति है, अगर वो शक्ति हम लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमको जो आदिवासी महापुरुष है उनके विचारों को अच्छे से समझना होगा। क्योंकि जो आदिवासी महापुरुष है उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके से किसी जाति विशेष या समुदाय विशेष से जंग नहीं छेड़ी। उन्होंने क्या किया है कि उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है जो हमेशा क्या है कि किसी भी सभी समाज के लिए शोषणकारी रहे, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, मुस्लिम हो या फिर जो भी हिंदू समुदाय हो, उन सब के लिए उनके सब के साथ जो है खड़े रहे हैं। और उनका जो विचार है वो क्या है कि जल जंगल जमीन, और जल जंगल जमीन जो है वो अगर इस प्रकृति को पूजने वाले जो लोग हैं और प्रकृति को आस्था रखते हैं तो वो क्या है कि प्रकृति की दी हुई प्रत्येक जीव और प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम भाव रखता है और उसी प्रेम भाव के कारण वो, मेरा मानना यह है कि वो किसी का नुकसान नहीं करेगा। तो अभी फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि अभी हमारे क्षेत्र में क्या है कि कुछ क्रांतिकारी हुए हैं जो क्या है कि सरकार की नजर में आज भी गुमनाम है। इसमें मैं मुख्यतः नाम लेना चाहूंगा छितू किराड़ का। छितू किराड़ जो है लगभग 1871 से लेकर 83 के बीच में संघर्ष किया था यहाँ पर, तो उसको आज भी क्रांतिकारी मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है, जबकि उसके बारे में पर्याप्त दस्तावेज हमको देखने को मिलते हैं जिसमें वेस्टर्न स्टेट गजेटियर सीरीज मालवा की जो वॉल्यूम 5 है 1908 के अंदर पब्लिश हुई थी, तो उसके अंदर स्पष्ट तौर पर जिक्र मिलता है छितू किराड़ का और भुवन तड़वी का। इसके अलावा जो है जो कलेक्शन ऑफ ट्रीटीज एंड एंगेजमेंट एंड सनद 1930 जो 1933 के अंदर पब्लिश हुई थी, तो उसके अंदर भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि ये जो छितू किराड़ है और भुवन तड़वी है, इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और यहाँ पर जो स्थानीय 5-6 शहर है उनके जो अनाज के गोडाउन है उनके ऊपर हमला किया। और उसका एक कारण यह था कि जो उस टाइम पे अकाल रहा था 1876 से लेकर 72 के बीच में, जिसमें आदिवासी समुदाय की जो हालत है काफी गंभीर और दयनीय हो चुकी थी, बारिश नहीं हो पाई थी। और इसके अलावा जो है अंग्रेजों ने अचानक से जो है जब अलीराजपुर के अंदर अपने कठपुतली राजाओं को बिठाया था, तब उनके इशारों पर जो है वहां पर जो भी जमींदार है उन्होंने क्या है एकदम से जो लगान वगैरह है वो ज्यादा बढ़ा दिया था। और इसके अलावा यहाँ पर स्थानीय क्षेत्र में मिलने वाला महुआ है जिसकी शराब वगैरह बनाई जाती है और यहाँ का जो आदिवासी समाज है वो उसको बेचकर कम से कम अपनी रोजी रोटी वगैरह भी चलाता है, तो इवन उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया था। तो भारी भरकम टैक्स, और इसके अलावा जो यहाँ पर पुराने जमाने से आदिवासियों के बीच स्थानीय स्वयं शासन हुआ करता था जो कि गांव के पटेलों के माध्यम से किया जाता था, तो उनको भी जो अंग्रेजों ने जो है खत्म कर दिया। तो
तो इन्हीं सब को देखते हुए जो है छीतू किराड़ और भुवन तड़वी ने इन्होंने विद्रोह किया था। और ये जो विद्रोह है वो केवल आदिवासियों ने ही नहीं, जो दाद मोहम्मद मकरानिस उनके साथ मिलकर लगभग 3 से 4 हजार आदिवासी लड़ाकों के साथ उन्होंने संघर्ष किया था। लेकिन वो संघर्ष भी जो है आज की तारीख में गुमनाम है एक तरीके से। तो जहां तक मेरा मानना है, सबसे पहली चीज तो यह है कि जो आदिवासी क्रांतिकारी है उनका जो मूल दर्शन क्या था, भगवान बिरसा मुंडा का, टंटिया मामा का, खाजा नायक का, उसको समझे हम। कोमराम भीम के संघर्ष को समझे। भगवान बिरसा मुंडा ने अम्बवा देश में अम्बवा राज, हमारे देश में हमारा राज का नारा दिया था, जो कि आज की परिप्रेक्ष्य में काफी खरा उतरता है कि जो इस देश के अंदर केवल जनता का शासन होना चाहिए, इस देश के अंदर जो है कानून का शासन होना चाहिए। लेकिन वो चीजें आज नजर नहीं आ रही है कि आरोप सिद्ध होता नहीं है उससे पहले किसी के घर के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। तो ये जो चीजें है, इसकी इन सब चीजों को समझने के लिए हमको जो है एक तरीके से आदिवासी दर्शन को समझना होगा, और उसके लिए हमको काफी संघर्ष और मेहनत की जरूरत होगी, क्योंकि जो आदिवासी परंपरा रही है वो हमेशा मौखिक परंपरा रही है। तो इसके लिए जो है क्या है कि मौखिक परंपरा के साथ धीरे धीरे जो चीजें है वो क्या है विलुप्त होती गई है। तो इसको फिर से तलाशना होगा। और इसके अलावा जो एक तरीके से बंधुत्व की भावना है और एक दूसरे के प्रति जो सम्मान की भावना है उसको समझने की कोशिश करना होगा। तो यहीं पर मैं रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। अपने बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे जो समस्याएं हैं आदिवासी समाज के, उसको आपने एकदम संक्षिप्त में रखा हमारे सामने। तो आपने जो भी बोला मैं उसको काफी कम समय में मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ, ताकि जो हमारे साथी जो हिंदी नहीं समझ सकते उनके लिए मैं ये बोल देता हूँ। So, Rohit spoke about the issues of jungle, zameen, water, forest, and land, which were the fundamental issues of the tribal revolutionaries in the colonial time, and these were the issues that that Birsa Munda also fought for. But the irony is that in the post-colonial time, we are still fighting for these issues, whereas certain rights have been granted to us in the 5th and the 6th scheduled areas. Rohit also mentioned that if we look at the statistics in this country, we find that Adivasis are the most displaced people in the name of these monolithic projects of which is often given the term called development. So if you look at dams, if you look at mines, if you look at emerging urban areas, maximum people who have been displaced in this country are the Adivasis. Another very important point which Rohit mentioned is the increasing communal tension that we face today as a country. So earlier, an Adivasi was friends with Hindu, Muslim, Christian, Sikh, and there was a very cordial relationship among them. But today, in the last 7 to 8 years, we find that it's becoming increasingly difficult for people to have a dialogue with each other. I think the most important point which he mentioned for me personally is the whole invisibilization of Adivasis. If there is one community in this country which has sacrificed maximum for the progress or the development of this country, it is the Adivasis, because much of the development projects have taken place on Adivasi land, but they themselves have become invisibilized. They are no longer, I mean, they are never part of the discussion whenever major decisions are taking place. So this whole people's rule, which is so important, which was the whole idea of independence, has been missing in the last 70 years, and that is a struggle that needs to be brought back, that needs to be recognized, and that needs to be put up front for our generation and for our future generation.
तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, और मैं अगले स्पीकर के पास जाऊंगा. Kabithui, are you here? Yeah, can you please unmute? I'll just introduce you. Yes. Okay, thank you. Kabithui Rongmei served as the first student council president during his post graduation in sociology and social anthropology at this Guwahati. He was also one of the founding members of the SC/ST OBC Students Association and was also its first president. He comes from the Rongmei community, which is one of the indigenous communities in the tribal hills of Manipur. So, Kabithui, over to you. You have 15 minutes. I'll send you a message when you've crossed 10 minutes. Yeah. Okay. Thank you, Professor. So a very good afternoon or evening to each and everyone that's here. Firstly, I would like to thank the National Alliance of People's Movement for the work that they've been trying to do, and the alliance that they are trying to build. Honestly, I would have preferred if there was someone else who is better qualified to speak about this topic. And so, like, I was actually reached out by one of my seniors from college to find someone who is better suited to speak about this. But then, in the limited amount of time we had, it was a little difficult. So we just decided to settle with me, and so this is how that happened. So yeah, to be honest, I think, like, forget like revolutionaries from the reason, right? I'm still like trying to grapple and understand the historical trajectory or individuals of my own tribe, to even try and speak about revolutionaries of more than 150 tribes, especially when all the state has been trying to do for the last 70 odd years is destroy it. So, like, it's very difficult because each of those tribes are tribes that have been fighting for their own rights. They have been standing up for their own rights, and now first was the British. Now, the Indian whole annexation, especially the way they are approaching the whole Northeast region right now, in the last 7 to 8 odd years. So it's difficult for me as an individual to even fathom like the complete picture of the Northeast. So for that very reason, I think, to be very practical, I will be speaking about my own tribe and the bits and pieces of history that I have stumbled upon so far. So yeah, so I will start by introducing my tribe to everyone. I belong to the Rongmei community. We spread across 3 different states of the Northeast region. Assam, there is a fair bit of Rongmeis in Assam, and then there is a fair bit of Rongmeis in Nagaland, and the most major population of the Rongmeis are indigenous to Manipur, right? So we primarily, the Rongmei sees themselves as Nagas, but this identity sometimes shifts, depending on the states we are in. I will touch upon this and try to elaborate on it later on the later part of the discussion if there is time. I think I would also like to talk a little bit about the present, but before I do that, I would like to give a little bit of like a historical perspective of how the people's movement of the Rongmei community have come so far. So like the theme, remembering social justice icons and martyrs, in particular brings 2 names in my mind. That is, the first one is Haipau Jadonang. So that's someone from my tribe, and
and I guess every person who have been reading on freedom fighters, at least from the Northeast, have heard of this name, Rani Gaidiliu, So I will start with Jadonang. So Jadonang is a social reformer. So he was apprehensive of the British as well as the spread of Christianity that the British came with. So he started resisting the coming of Christianity by trying to revive the age-old traditional practices of worship, which we call Paupai Chabdya, which was primarily about worshipping nature. So he also stopped his fellow folk from paying taxes to the British. So they had started levying taxes, and this is in the 1800s, towards the end of the 1800s. So he started asking them to not pay, and then he also spearheaded an ambush against the British incursions in the region, for which he was hanged in 1931. So I think it's important for us to know a little bit about Jadonang if we are going to speak about Gaidiliu, because Gaidiliu is a cousin of Jadonang. So that's how the story of Gaidiliu began, right? So Jadonang started the Heraka movement, which started as a religious movement of worshipping nature. So now with the coming of the British, and then with people realizing that their rights are being affected by these aliens who are coming in, so they started shifting towards political tangent, aiming which aims to drive out the British from the Naga inhabited area. So Gaidiliu joined the Heraka movement, as it was called, at the age of 13, and but then after the death of her uncle Jadonang, she took and spearheaded the movement. But one thing about Gaidiliu, even at such young age, was that she did not want to go back in time like her uncle. She was not searching for solution in the past. She wanted to move forward. So she moved away from traditionalism, but towards rationality, right? So she, at least among her her uncle's follower, or her followers now, she started questioning banning sacrificing of animals to cure diseases, when there were village problems, they would sacrifice animals and stuff to take this evil away. Oh my God, So she started questioning all of those ideas, and then she advocated for cleanliness, because at this time, the Nagas, at least the Rongmei, I would speak for the Rongmei. So we're living in the same room, one single room, with their cattle and their poultry, as well as their whole family members. So it was at that time. So there was a lot of diseases. People were dying because of the lack of cleanliness and all that. So she started with that exposure she started questioning that, we should stop sacrificing animals and then move forward to changing our lives a little bit. So she started this movement, and then she was arrested at the age of 16 in 1932 by the British, because she still took over Jadonang's movement. So she never had formal education except for the influence of her uncle, and she also campaigned against taxation by the British. She evaded arrest, moving across different Naga villages. In every village she went, she had the people's popular support. Towards the time of her arrest in 1932, she had garnered enough force to engage in an armed conflict with 2 battalions of Assam Rifles. Right. So now
but then she got arrested, and after her release, Nehru met with her and gave her the name Rani Gaidillu. So this is a question I keep asking: why did Nehru come to Gaidillu and give her this title, while there were so many other Naga leaders who were more prominent, who were affecting the Nagas at a whole structural scale, while Gaidillu's influence was sort of limited to the Jellingrong, right? Because I think I deduce it down to the fact that because unlike the other Naga leaders who were fighting for independence from India at that time, Rani was pro-Indian, right? Her primary oppressors were the British, and she had faith in the newly formed independent Indian state. And I think this is also why, the BJP one way or the other just keeps bringing Gaidillu's name and then addressing her as Rani. But in my faith, I think if Gaidillu was alive today, looking at the present state of the country, BJP trying to appropriate her movement to expand their idea of a Hindu nation, she would be at the forefront, barging into every random household, smashing every cell phone and TV, that streaming Republic TV. So that is the sort of a person she was, at least how we remember her, at least how the Rongmei remember her. So can someone tell me like how much time I have left so that I can decide? Yeah, you have 5 minutes. Yeah. Okay. So so I was speaking a little bit about how my tribe sort of every time we move to another state, our identity changes in the sense, and that is a very structured plan, I think, that the Indian state or whoever was making the calls, shots at that time made, is that so the Nagas have been saying that we don't want to be part of India for so long, since the at least prominently since the early 1900s. So what they did was they even the British, when they drew the Radcliffe line, they divided the Naga dominated areas. A part of it was in Myanmar and the other part of it was in India. So now that division happened. And then after that, some of the states were still fighting for it. So then they broke this Naga dominated area into 3 different states. There is a part of it is in Arunachal Pradesh. A major part of it was given as Nagaland, where most of the prominent leading tribes were living. And then a small portion of it was, a part of Manipur. So now they have sort of the major tribes, because they do have the leadership position. There is not much compromises they are making. But then now, when those people leading the movement got their own state, it became lax for them. But then the people who were not a part of the major tribes, like the Rongmei or the Tangfuls, who they were made the minorities in different states like Manipur and Arunachal Pradesh, where they do not have any political participation. So now, because traditionally we considered ourselves Naga, when I'm in Manipur, I say I'm a Naga. But then, because there is a lot of problems, big insurgencies, and then a lot of blockades, bunds, so it's difficult to pursue education in Manipur. So I moved to Nagaland. And because I had always thought Nagaland means my land, Naga.
So I sort of went to Nagaland, and then I did my education there from like 8th standard to 12th standard. And then I was very shocked. Like within the first month I came there, the Nagas who I thought were my brothers started calling me Manipuri. So I think at one point it went so far so bad that like this person who came from Manipur, like they wrote it down on a board. So it was sort of that thing, and it was very structured. The way they implemented it, the way they planned it out, and yeah, and so when I was talking a little bit about Haraka movement and how the BJP is trying to appropriate it, because I think the biggest obstacle the BJPs or at least the RSS have in taking over this whole country and then making it a Hindu nation is the Muslims and the Christians, because they believe in one God, right? And for them, it's very difficult to appropriate this thing, like, because every time they meet someone else and then they're like, we worship these three, then they're like, oh, we also worship these three, we are same, that thing happens. But then with one God, it becomes very difficult for them. So now what they are doing is RSS is sponsoring Haraka and this movement, and then they are pouring money into these places so that they can, at a later stage, just come and then be like, hey, हम लोग तो एक ही है, हम तो एक ही भगवान को मानते हैं, that thing. So I think that is also why there is a lot of targeted attempts and attacks at Christians and Muslims in the last few years. I don't know, I spoke bits and pieces and too many things. I hope some of it made sense. And that's all I want to say for this for now. Yeah, thank you. Thank you, Kabithui. I really liked your presentation. I think, it's very important. When I began my introduction, I said that it's important to get voices from all over this country, and the imagination sometimes doesn't, allow us to think of people who are living just, who are not immediately close to us. So I'll just translate what you said quickly to Hindi so that people can able to understand. So कवित्वी ने बोला कि अगर हम आदिवासी रेवोल्यूशनरीज के बारे में बात करें, मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में ही 150 ट्राइब्स हैं, तो 150 रेवोल्यूशनरीज के बारे में बात करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर वो ब्रिटिश टाइम के बारे में बात करें या फिर जब से इंडियन स्टेट बना है तब से बारे में बात करें, तो वो हर एक ट्राइब के बारे में बात करना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने अपने ही ट्राइब जो रोंगमाई ट्राइब है उनके बारे में उन्होंने बात की और उसमें उन्होंने दो रेवोल्यूशनरीज का नाम लिया, एक हाइपोन जरोनांग और उनकी जो नीस थी जिनको बहुत लोग जानते हैं रानी गाइडलिनी के नाम से। एक जो उन्होंने इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला कि किस तरह से जो रानी गाइडलिनी का जो एक पूरा स्ट्रगल था वो इंडिया से अलग होने के लिए नहीं था, बट इंडिया के साथ में रहने के लिए था। लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी अप्रोप्रिएट कर रहा है उनको और उनके इतिहास को, उनके याद को, अगर वो आज जिंदा होती तो वो अलग ही डायरेक्शन में वो फाइट कर रही होती। और दूसरा बात जो उन्होंने बोला कि किस तरह मणिपुर के अंदर में ही ट्राइब्स, बहुत सारे ट्राइब्स मणिपुर के अंदर में ही माइनॉरिटीज बन गए हैं। एंड इवन व्हेन वी टॉक ऑफ नागा ट्राइब्स, तो अगर वो मणिपुर से नागालैंड जाते हैं, जैसे कभी तो खुद गए थे अपने हायर एजुकेशन के लिए, तो वो एक ये सोच के गए थे कि नागालैंड अपना ही देश है, अपने ही लोग हैं। लेकिन जब वो वहां गए तो वहां के जो नागास हैं उन्होंने उनको एक मणिपुरी का लेबल डाल के उनके साथ ये एक भेदभाव जैसे किया। तो ये जो जिस तरह से हम एक अजम्पशन मानते हैं कि एक
प्योरिटी का जो नोशन है वो केवल कास्ट सोसाइटी में ही होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ट्राइबल सोसाइटी में एक तरह से एक अलग टाइप का प्योरिटी नोशन आया है, जिसमें जो नागालैंड के नागास है वो ही समझते हैं कि वो असली नागास हैं, और जो मणिपुर में जो रहते हैं उनको लगता है कि उनके लिए वो सोचते हैं कि ये असली नागास नहीं है. सो दिस काइंड ऑफ दिस मेक्स द सिचुएशन वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड इट calls for a fresh look at this whole tribal question. So what are we exactly talking about when we talk of revolutionaries? It is not a universal theme. It's very disparate. It varies across region to region and across different contexts. So ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है. तो इसी बात को लेके हम अब चलते हैं अपने आखिरी स्पीकर के पास, एलिन लाकड़ा. एलिन आप हैं? आई कैन सी एलिन. जी जी. तो आई विल जस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस एलिन. Elin Archana Lakra is a native of Gumla district in Jharkhand and belongs to the Orao tribe. She studied social work at the Stella Maris College, Chennai, and she has been engaged with various grassroots movement and civil society organizations. She is currently working with Sruti, which is the Society for Rural, Urban and Tribal Initiative, which is based in Delhi. She has consciously engaged on issues which are linked to displacement, forest and land rights, environment conservation, education, migration, local governance, and improving conditions of women in society. She has also engaged in partaking researches and producing reports on the review of the 14th Finance Commission grants to Gram Panchayat and Gram Panchayat plans, as well as the Jharkhand Indigenous Peoples Forum of 2017. So with this brief introduction, and since I know her for a long time and she's been engaged with a lot of work, and I'm very happy to see her. So Elin, over to you. आपके पास 15 मिनट. एक मिनट सॉरी. हाँ मेरा बैग. हाँ आप ठीक है, आपके पास 15 मिनट है और मैं आपको 10 मिनट बाद में आपको मैसेज कर दूंगा. सो यू कैन बिगिन योर टॉक नाउ. थैंक यू. थोड़ा सा रुकेंगे 1 मिनट. श्योर. ओके. थैंक यू आशीष. मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ. ठीक है. तो सभी साथियों को जोहार, जय भीम, सतरंगी सलाम और जिंदाबाद. सबसे पहले तो मुझे खुशी हो रही है कि NAPM के इस राष्ट्रीय मंच में हम मिल रहे हैं, और जब हम मिल रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं, तो चर्चा शुरू हो गई है. और इसमें मैं इस बातचीत के समय में कोशिश करूंगी कि हमारे जो पुरखे क्रांतिकारी रहे हैं और उनका जो सपना रहा है, क्या वो पूरा हो रहा है क्या, और अभी जो परिस्थिति उभर के आया है हमारे सामने, वो क्या परिस्थिति है. और विशेषकर मैं एक झारखंड के और क्या कहते हैं ग्रेटर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी. तो मेरी बात कहने से पहले मैं एक छोटा सा वीडियो चलाने के लिए आशीष को आग्रह करूंगी. लगभग 1.5 से 2 मिनट का है. और हाँ आशीष, आप वीडियो चला दीजिए. अच्छा एलिन, वो मुझे उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं उसको एक आपके पास है तो आप उसको शेयर स्क्रीन करके आप उसको शेयर कर सकते हैं. 1 मिनट मैं कोशिश करती हूँ. टाइम है ना हमारे पास? हाँ है. ओके. अगर आपको को होस्ट बना दिया तो आपको शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा. ठीक है. हाँ, तो आप अपने डेस्कटॉप से आप शेयर कर सकते हैं. व्हाट्सएप पे है तो मुझे भी भेज सकती हो. आई कैन ट्राई. मैं भेजूं क्या आपको? हाँ, मेरा को आप भेज दो, देन शी कैन शेयर. तब तक तुम बात कर सकती हो. 1 मिनट में भेज लेती हूँ.
चलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। नहीं, कोई हाँ मैं भेज दी मेरा आपको। ओके, तो तब तक तुम थोड़ा कंटिन्यू करोगी एलिन, बात रखना, मैं डाउनलोड करके फिर, या वेट ओके। करेगी? एक्चुअली मैं उसी से जोड़ते हुए करना चाह रही थी, ठीक है। तो लेकिन ठीक है। हमारे पास टाइम है, तो मेरा अगर आप जल्दी से इसको कर सकते हैं। हाँ प्लीज कर दीजिए उसको। हमारे पास टाइम है वैसे। हो रहा है मेरा। आवाज नहीं है। साउंड नहीं है मेरा। ठीक है, छोड़ देते हैं। मेरा छोड़ दीजिए, ठीक है। नहीं नहीं आ रही है साउंड। ओके, हाँ साउंड नहीं आ रही क्या? नहीं 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 आ रही। ओके, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, थैंक यू, कोशिश किया गया। हाँ तो इसमें मैं यही कहना चाह रही थी कि ये जो वीडियो है ना, एक्चुअली अभी नेतरहाट में फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में आंदोलन लगभग 30 साल से चल रहा है। और इस आंदोलन का क्या कहते हैं, विरोध संकल्प दिवस 22 और 23 मार्च को रखा गया था। और मैं इस वीडियो को इसलिए दिखाना चाह रही थी कि ये आंदोलन के जो गाने हैं उसको वहां पर उपस्थित हजारों लोग एक साथ एक सुर में गा रहे हैं।
जो मेरे लिए बहुत ही क्या कहते हैं स्ट्राइकिंग मोमेंट था। और मुझे यही समझ में आया और क्या कहते हैं अपने क्या कहते समाज में मैं यही अनुभव की हूँ कि आदिवासियों का क्या कहते हैं कोई लीडर नहीं होता है, कोई क्या कहते हैं एक लोग नहीं गाते हैं, कोई एक लोग क्या कहते हैं नहीं नाचते हैं, इतना तक कि एक मांदर भी नहीं बजता है। मतलब कई मांदर बजते हैं वहां पे, ये एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वहां बजता है, तो ये वहां बज रहा है और लोग एक साथ एक सुर में गा रहे हैं। तो अगर मैं संक्षिप्त में बता दूं इस आंदोलन के बारे में, तो यहाँ पे लगभग 245 गांव को फील्ड फायरिंग रेंज के लिए नोटिफाई किया गया है और इन लोग 30 साल से विस्थापित होने का डर झेलते आ रहे हैं, लड़ाई करते आ रहे हैं। और अभी ऐसे समय है जहाँ नेक्स्ट मंथ में, मतलब मई महीना में इस फायरिंग रेंज का रिन्यू होने का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में है और इन लोग लड़ाई कर रहे हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं यही कहना चाह रही थी कि आदिवासी समाज में जब कोई एक लीडर नहीं होता है, जब हर चीज साथ में होता है, तो मुझे लगता है यही आदिवासियत है और यही आदिवासी दृष्टिकोण है। और मैं जब आदिवासी दृष्टिकोण की बात कर रही हूँ, तो बहुत ही सरल शब्दों में इसको ये कह सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में सभी प्राणी जगत के लिए एक जगह है, उनका एक जगह है और सब समान है। और इसलिए तो हम सुनते हैं जिसको उल्का महाजन जो महाराष्ट्र के हैं, वो कहती है कि एक नारा हम देते हैं, क्या कहते हैं जब हम धरना देते हैं, रैली करते हैं उस समय, कि हम सब एक हैं। तो ये नारा हम देते हैं। तो ये आदिवासी जो दृष्टिकोण है, जिसको समझने की बहुत जरूरत होता है। और अभी के समय में जब हम देखते हैं कि अपने ही आंदोलनों में हम एक व्यक्ति को ढूंढते हैं कि कौन है इसका अगुवा। हम देखते हैं कि राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि हम पहले देखे हैं, चाहे अभी भी कहीं जगहों में है कि हमारे जो ट्रेडिशनल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो व्यवस्थाओं के अगुवे लोग हैं, हमेशा से समाज के हिस्से बनकर एक समान रूप से रहते आए हैं। वे भी सामान्य व्यक्ति के खेतों में मदद के समय साथ में काम करते आए हैं। उनके लिए कोई अलग से कुर्सी नहीं होता है। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि क्या कहते हैं, एकदम विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं। और क्या कहते हैं, अगर हम गांव में देखेंगे जो सरपंच बने हुए हैं, तो उनके अपने जो सीमेंटेड आंगन में स्कॉर्पियो के साथ पक्के बिल्डिंग में रहने लगे हैं, जो साफ साफ दिखाई देता है कि किस तरीके की व्यवस्था बनी है और उस व्यवस्था में कितना क्या कहते हैं असमानता है, कितना ऊंच नीच का भावना बढ़ते जा रहा है। तो इसका कई कारण है, जिसको पहले के हमारे साथी जो बात रखे उन्होंने रखा है कि किस तरीके से बाहर के समाज का जो इन्फ्लुएंस है वो वहां पे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ हम ऐसे कालखंड में रह रहे हैं जहाँ पे बाजार हमारे एरिया में हावी हो रहा है, अन्य तथाकथित मुख्य धारा के लोगों के साथ में घुल मिल रहे हैं, चाहे विवश हो रहे हैं हम लोग उन समाज के साथ में, उनके विचारधारा को, उनके सामाजिक व्यवस्थाओं को मानने के लिए, चाहे उसके साथ रहने के लिए, और उनके ही द्वारा जो थोपे गए व्यवस्थाएं हैं उनको अपनाने के लिए हम विवश हो रहे हैं। ये व्यवस्थाएं जब मैं कह रही हूँ तो ये मुझे लगता है जो बहुत प्रोमिनेंट है वो है जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे जो सरकारी कानून है
और जो नीतियां हैं, जो नहीं मानते हैं कि अच्छा इस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, लेकिन संविधान में 5वीं अनुसूची लिखित है, अंगीकृत है, तो भी वो कहीं लागू हुआ है होते हुए नजर नहीं आता है। और दूसरा एक तंत्र जो मुझे नजर आता है वो है धार्मिक तंत्र, जो हमारे ग्रेटर झारखंड के एरिया में, जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर इस पर बात करेंगे तो क्या कहते हैं, हम अलग अलग हो जाएंगे, हमारी एकता टूट जाएगी। लेकिन मुझे लगता है ये जो व्यवस्था हमारे एरिया में जो आया है, जो चल रहा है, वो अपने साथ एक नया तरीका का एक दृष्टिकोण लेकर आया है। ये नया तरीका जो दृष्टिकोण है वो आदिवासी दृष्टिकोण से एकदम अलग है। और वो क्या सिखाता है आपको, बेहतर होने का परिभाषा सिखाता है, एक दायरे में रखता है, एक विशेष तरीके के क्या कहते हैं, जीवन शैली, शिक्षा, भाषा, जीविका के साधन को प्रोत्साहित करता है। और इस तरीके के आंदोलन, जैसे पहले के साथियों ने रखा है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, इसमें मैं इसको इस तरीके इन आंदोलनों को मैं इसी दृष्टिकोण के विरोध में लड़ाई देखती हूँ, क्योंकि जल जंगल जमीन जो हमारे अस्तित्व का, हमारे जीविका का जो एक क्या कहते हैं, जो संबंध है, उसको ना समझ करके अपने फायदे के लिए इनको जस्ट एक फायदे का संसाधन मानते हैं। अभी मैं ये गई थी हसदेव, जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे हमारे लगभग 8 गांव के साथी लोग अडानी के क्या कहते हैं, एक परसा कोल ब्लॉक है, उसको अडानी को दिया गया है और पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई है। तो उसमें लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, रोज दिन लड़ रहे हैं। और वो मुझे लगता है उनका जो एक मनस्थिति थी, उनको जब देख के मुझे लगा कि अंदर ही अंदर उनको असुरक्षित महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि आदिवासी लोगों का जो इतिहास रहा है ना, वो लड़ाई का इतिहास रहा है। और क्या कहते हैं, कमर तोड़ने वाला लड़ाई लड़े हैं, लेकिन वो कभी हार नहीं माने हैं। वो उनसे जब बात हो रही थी तो उन लोग मुस्कुरा भी रहे थे, हंस भी रहे थे। मैं बार बार ये सोचती हूँ कि आदिवासी लोग नाचते क्यों हैं, लेकिन फिर अब समझ में आता है कि क्योंकि ये उनका क्या है, शक्ति है, पावर है। इसी से क्या कहते हैं, लड़ने की शक्ति उन लोग लेते हैं, हम लोग लेते हैं। और ये सब प्रकृति से मिलता है। प्रकृति, मुझे लगता है ये बहुत सारा चीज हम सीख सकते हैं, जिसको दूसरे समाज के लोग नहीं समझ पाते हैं। और जब ऐसी स्थिति में ये पूरा जो अब हम देख रहे हैं कि पूरे आदिवासी क्षेत्र में, चाहे वो क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ में हो, झारखंड में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, सब तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इस दृष्टिकोण के साथ में लड़ाई चल रही है। तो ऐसे समय में मैं हमारे समाज को पाती हूँ एक केओस की स्थिति में, जहाँ पे लोगों को नहीं पता है कैसे सोचेंगे। तो वो सोचने और पढ़ने का एक क्या कहते हैं समय होना चाहिए, वो तो है ही नहीं ना, क्योंकि आप रोज मर्रा का जिंदगी में केवल लड़ाई कर रहे हैं। तो और फिर ऐसे परिस्थिति में जब युवाओं को देखते हैं, तो युवा लोगों का उनके ऊपर में ये जो केओस स्थिति है, उस पर युवाओं पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
बहुत ही कंफ्यूज्ड लगते हैं मुझे। और हम एक तरफ जब हम युवाओं के साथ काम करते हैं तो एक तरफ हम देखते हैं हम आदिवासियत की बात कर रहे हैं, अपने पारंपरिक परिधान की बात, परिधान को पहन के नाच गान कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसे परिस्थिति में जो हमारे समाज में जो निहित मानव मूल्य है, समता मूल्य और न्याय संगत जो सोच है, क्या हम बचाए रख पा रहे हैं? ऐसी अजीब सा मोड़ में मुझे लगता है आदिवासी युवा खड़े हैं और बहुत ही आंतरिक संघर्ष के साथ में जूझ रहे हैं। बहुत सारे सेल्फ डाउट्स हैं, डरे सहमे से हैं, इनसिक्योर हैं, बाहर से क्या कहते हैं गुमसुम नजर आते हैं, लेकिन क्या कहते हैं अंदर से कई सारी चीजें चल रही होती है। और शायद मुझे लगता है इसके ऊपर में बात करना हम बहुत कम प्राथमिकता देते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो और इस जो परिस्थिति जो बनी है उसको मैं मुझे लगता है कि जो युवक हैं, लड़के हैं, उनको ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनको आजादी तो है और कम जिम्मेदारियां दिया गया है, लेकिन क्या होता है कि फिर जब इन परिस्थितियों को झेल नहीं पाते हैं तो आजादी है तो हड़िया और फिर दारू, चाहे इस तरीके से अलग अलग चीजों में लिप्त हो जाते हैं, फिर बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ युवतियों का जो परिस्थिति है वो ये है कि क्योंकि उनको जिम्मेदार बनने के लिए सिखाया जाता है, तो वो किसी प्रकार से पढ़ाई कर लेती है और ज्यादातर लड़कियां आर्थिक रूप में स्वतंत्र हो जाती हैं। और अजीब सी बात यह है कि इस परिस्थिति को समाज के जो पुरुष वर्ग है ना, वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। आए दिन देखते हैं और मैं भी उसमें उलझ जाती हूँ, महिला मुद्दों में आपसी लड़ाई चलती रहती है। कहते हैं कि नहीं हमारा समाज ऐसे नहीं है, हमारा समाज में महिलाओं को बहुत आजादी है, हमारा समाज एकदम परफेक्ट है। तो मुझे लगता है हाँ, अभी के जो सरकारी हिंदू समाज की तरह खुद को सर्वोत्तम समझने लगे हैं। तो ये हम ये नहीं कह रहे कि आदिवासी समाज की गलती है, क्योंकि आपके पास ये जो व्यवस्थाएं हैं वो इस तरीके से हावी हुआ है कि आप उसी तरीके से सोचने लगे हैं। आप अपना जो आदिवासियत है, अपना जो दृष्टिकोण है, उसको हम भूलते जा रहे हैं, जो कि बहुत खतरा महसूस होता है। और मैं तो ये भी कहते हुए, मतलब वो दिखाई देता है सोशल मीडिया में कि हमें पूंजीपति बनना चाहिए, तो हम क्या कह रहे हैं, हम उसी शोषक समाज के तरफ जा रहे हैं, वैसे ही बनना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही दयनीय और सोचनीय स्थिति है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और ऐसे वक्त में बहुत जरूरी है कि एक डायरेक्शन तय करना, कोई एक दिशा खोजना। इसके लिए मुझे लगता है हम युवाओं को, हालांकि ये काम हो रहा है अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन फिर उसको और क्या कहते हैं बहुत तेजी से करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहरी शक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके लिए हम युवाओं को मुझे लगता है डबल एफर्ट्स लेना पड़ेगा और इन थोपे गए तंत्रों को समझना, अपने ही समाज को रेकी करना, फिर दिशा निर्धारित करना बहुत जरूरी लगता है। और इस प्रक्रिया में क्योंकि मैं खुद से अनुभव कर रही हूँ, अपने युवा साथियों से बात कर रही हूँ, क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया में हमें बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव करना होगा, उस तरीके से देखना होगा। बहुत सारे चीज हम सीख गए हैं, अपने हैबिट में लेके आए हैं, तो इन सारे हैबिट्स को क्या कहते हैं, डी लर्निंग का प्रोसेस में लेकर आना पड़ेगा, और तभी हम आंतरिक रूप से आजाद होंगे। ये आंतरिक रूप से आजाद होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, तभी हम क्या कहते हैं, हम एटलीस्ट सोच पाएंगे। और क्योंकि सोचने और समझने, पढ़ने
इस तरीके के काम को हम युवा लोग, चाहे हमारे समाज के लोगों को वो क्या वो मौका नहीं मिल पाया है, क्योंकि हम लड़ाई करते आए हैं। तो ये बहुत जरूरी है, मुझे लग रहा है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एलिन। आपने भी हमारे बाकी 3 साथियों के जैसे बहुत सारे इश्यूज को सामने लाया। तो मैं जल्दी से आपके बातों को संक्षिप्त में इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो Elin began by talking about the Netherhart field firing range and how that is a very, in a way, striking and very pivotal moment for her. What she observes in that remembrance video that she shared with us is that in the Adivasi society, in tribal society, there cannot be one leader that all of us gravitate towards. Like for the most part, if we read histories, there is always one leader among several communities. But in the Adivasi society, the beauty of Adivasi society is that each member, each person is a leader in and of themselves, and collectively they form the larger Adivasi struggle, which is often reflected in most of the movements that have been fought. Lekin of late, there have been several, in a way, religious differences that have permeated the Adivasi society in Jharkhand. So broadly speaking, there might be Sarnas, Christians, and others, and other sects of various religions, and that in a way can pose a problem. People assume that can pose a problem for Adivasi unity. But what Elin is saying is that despite the fact that there are so many struggles, so many problems, Adivasis have been accustomed to fighting for such a long time that it also reflects in the various dance moves that they have done, that the various cultural reflections to the struggles that they have done over several centuries. And it is there that she sees some hope, some hope, like some a glimmer for the future. And it's also a lesson for all of us that despite the fact that we face a barrage of problems, issues, challenges, we always need to come together as a community to solve them, because there cannot be a single person who can be a leader in the Adivasis. It's always been a collective response to the various challenges that have always been hurled upon Adivasi societies, upon tribal societies. So with that, I think we have come to the end of the first round. So I request all the speakers to kindly switch on their cameras. There are a couple of questions which have been there on the chat box. I request the audience members to kindly post their questions on the chat. So I will begin. So what we'll do is we will take the questions that have been given to us. यहाँ पे जो questions आए हैं उन सबको हम लेंगे. उसके बाद we will give one final round of 1 to 2 minutes each to each speaker. जितने भी जो हमारे साथी हैं, जो speakers हैं, उनको हम ये question and answer session के बाद हम 1 से 2 मिनट का समय देंगे. वो अपना फाइनल कमेंट्स, अपने क्लोजिंग कमेंट्स को यहाँ पे रख सकते हैं. So the first question is from Kishore. He says that I had a broad question on the idea of consciousness and thinking about heroes within brackets Mahapurush and crowd. How do we approach or think through revolutionaries and educate ourselves into the idea of consciousness? We might get caught into identity politics if we only think through heroes' history. How do we think about citizenship now as a form of consciousness? And the question of gender further complicates it. मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हम केवल एक हीरो के तहत से अगर हम सोचे तो हम लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में फंस सकते हैं.
और अगर हमको सिटीजनशिप मतलब कि अगर इस देश के रहने वाले लोगों में से अगर हम उस हिसाब से अगर सोचे तो हम इसको कैसे देखते हैं, और जो जेंडर का जो क्वेश्चन है वो उसको फर्दर कॉम्प्लिकेट करता है. सो I think this question is open to everyone, but I think since Sushma spoke about consciousness, so maybe she can take this question and then other people can also respond to it. So Sushma, you can. Ashish, Meera says something. Do I have to speak after that? No. You please continue. This is for people after this question. Anyone, If they, yeah. If they want, yeah. You can please continue. Yeah. Okay. So, if I'm not wrong, the question is, how do we look into the consciousness through a heroic person, and how do we have to look into the question of citizenship? And when it intersects with gender, it becomes more complicated, right? Yeah, so the entire concept of consciousness is not to get stuck with the identity politics. That's the entire idea of consciousness. The idea of consciousness is how you kind of, assert yourself at the same time. You liberate yourself from the sort of consciousness that is being asserted to you. For example, see, there are many other words that will be disagreed when it is given to an Adivasi identity or an indigenous identity. For example, when the anthropologists call us savages, that is one of the identities that is given. So the consciousness here is to break such kind of stereotypes and not to get into the parallel or not to get stuck with such identities. These are the secondary identities that are given to to a section of people, right? So we have to make a difference here. The difference here is how do we see the identity politics? Identity politics, are they kind of assertive? For example, the term Dalit, right? So even if you go through the Constitutional Assembly debates, there was an instance where Jaipal Singh Munda said, "I'm proud to be a Jangli." See, but Jangli is supposed to be a derogatory word, right? But as a matter of assertion, Jaipal Singh Munda came up and said, "I'm proud to be a Jangli, I'm proud to be an Adivasi." So these are some kinds of assertions. These are the political, social identities that that are termed as emancipatory terms, as against the derogatory terms like I'm sorry to say this, but we were called as chinkies, we were called as savages, we were called as barbarians, and whatnot. So these are the kind of identities that should be dismantled. This is how the consciousness works. And the second part of the question to answer this, how do we look into the question of citizenship, right? So yeah, citizenship, again, coming to the question of citizenship, there is this pseudo concept of sons of soil. Like my second, I think this is not speaker. Yeah, as we were speaking about ethnocentrism and everything, there is a particular, you call it jingoism or the pseudo nationalism, which is not only applicable to the entire country, but this is also a concept which is very much prevalent within ethnic groups. Like you should be born in a particular community, you should be brought up in a particular way, and any kind of the already existing modern way which could be implicated in a very different way. For example, equality or the egalitarian societies, like Elin says, it is not a perfect thing, but there are few aspects of equality that could be within the ethnic groups, and these could be manifested into a different way of equality with the modern society. As in, this is a modern value which already existed in the society, but there could be a different way of expressing it. See, for example, the way you dress this is like a classic example, the way you dress in your within your ethnic group could be a different thing. But when you move to a different cultural society, there you would be behaving something very different. But there is a kind of assertion of equality there, where you wanted an equality to dress like everybody. This is the concept of equality, but there is a difference in exercising it within the community, and where you have to assert yourself. Similarly, the concept of citizenship, where you cannot say that see, these are the sons of the soil. See, because migration is a very possible thing, and it's a very kind of accepted thing. On the other hand, there is so how you see citizenship. So migration, and then there is forced displacement.
these both are not the similar things, because the issue in Telangana, Andhra Pradesh is about the Adivasi peoples, and there is a Lambada issue. These people, this is a certain group. They are the caravan groups. They're not being accepted as a tribal. They're not Adivasis, but they're termed under the scheduled tribe list. So there's a difference between Adivasis. There's a difference between tribe, and there's also an altogether different term called as indigenous populations. So somewhere you have to recognize the differences, and you have to see how everybody, how the citizenship shouldn't be a very regressive or very exclusionary term, in terms of looking at the humans being migratory and not being the sons of the soil. It should actually be how organic contributions these populations have made to the soil, and how this labor is to be respected, and how broader the citizenship should come into place. I don't know if I answered the question, but if you think this is not enough, you can just drop an extending question to it. No, I think this is like, I think you summed it up like quite well. So what we can do is we can go to the next question, and if anyone has a follow-up question to the first question, they can always put that in the chat box. So the second question is from Mr. Ashok. So he's asking, what is the impact of religious sects on tribal identity? How do they operate within tribal communities? So maybe Kabithui and Elin can answer this question, because they spoke of the various sort of religious differences that operate within the tribal community. So Kabithui, maybe you can go first, and then I can go to Elin. So like, again, because the context is very different for the Northeast and other parts of India. So, the question that's coming might be answered very differently depending on just a second, Kabithui, just a second. So I'll just repeat the question for those in Hindi. सवाल ये है कि आदिवासी समाज में जो विभिन्न तरह के रिलीजियस सेक्ट्स आए हैं, वो कैसे आदिवासी समाज को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो हिंदुइज्म का कोई स्टैंड हो, या फिर चाहे वो सरना धर्म हो, चाहे वो ईसाई हो, वो किस तरह से आदिवासी समाज को अफेक्ट करते हैं। तो मैंने पहले रिक्वेस्ट किया है कि कवितुई इसके बारे में कुछ बोले नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से, फिर मैं एलिन के पास जाऊंगा जो इसको सेंट्रल इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे। सो कवितुई, प्लीज कंटिन्यू। Yeah, so the narrative in the Northeast has been like, we have shifted from primarily worshipping nature, which is what our ancestors did, to converting to Christianity. Now, but then there is still a sect of people that is still following the, haraka or the traditional worship practice, like, so they worship nature. Now, what's happening is, because at least in the Naga context, it's like majority of the population are from the Christian community, and so that's where, like, the stronger the faith, the lesser the ability to rationalize. So what happened was, in one of the conclave I attended, this is a real event that happened. So like, two students, like, they were my friends. We attended a conclave together. They were both from Peace. Yeah, so just giving you that context as well. So we attended, and one tribe, so it was a tribal conclave, and one tribal woman from Arunachal Pradesh spoke about how discriminated she feels because she is not Christian, and like, the NSCN, that's the Naga of representative force or army. So a lot of things to talk about that also, but like, leaving that aside, so
because the Nagas in Arunachal Pradesh, as population of them are not yet Christian, but they are still following the old ways. So they feel targeted by the NSCN as well. So she was expressing about how she's scared that her traditional practice will vanish because of the introduction of Christianity and this imposition of Christianity. And like anyway, as long as you are getting educated in any Indian board, so you anyway get indoctrinated and you lose touch with your culture. So she was worried, and then she was expressing this. And then to my surprise, these two women from these who is interested in the issues and trying to understand complexities or whatever Thesians like to call their consciousness. So these two women got so offended that someone is talking about Christianity like that. And now they started screaming at this poor woman for like bad mouthing Christianity, like, and because it was Northeast and the tribal, at least most of the tribal population in the Northeast are Christian. Everyone started agreeing with these two women, and this poor woman was just trying to express her problems, and then and the extent to this is because that woman was just talking about how her uncle was killed and his body was not found for so many days, and this time it was not the Indian Army, it was the NSCN who killed her. So now that woman is crying like this after sharing such a heart-breaking, difficult to share, and what the people picked up on is why are you speaking about Christianity like this? So I think the influence of Christianity, at least in the Northeast, is an obstacle for the Hindus to come, but also, I mean, it's still a structural problem. Like whatever Christianity teaches also has a lot of problematic things. So yeah. Okay, thank you so much. So कविता ने अभी बोला कि जो अलग अलग धर्म होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उन्होंने एग्जांपल दिया कि कैसे एक मीटिंग में वो गए थे अपने साथियों के साथ में, और वहाँ पे अरुणाचल से एक नागा महिला थी जो कि क्रिश्चियन नहीं है, वो अपने इंडिजिनस रिलीजन को अभी भी फॉलो करती हैं, और कैसे उन्होंने जब ये प्रस्ताव रखा कि उनके लिए कितना मुश्किल है कि नॉर्थ ईस्ट में वो स्पेशली नागा सोसाइटी में वो क्रिश्चियन नहीं है, तो ये बहुत लोगों के लिए ऑफेंसिव हो गया था कि आप कैसे क्रिश्चियनिटी को बैड मार्क कर रही हैं, तो कि जो भी कि वो क्रिश्चियनिटी को क्रिटिक नहीं कर रही थी, वो कहती कि उनका अपना सिचुएशन क्या है. तो so yeah, this is a pretty serious issue, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक तरह से जो लार्जर हिंदू स्ट्रक्चर है उसको प्रिवेंट करता है नॉर्थ ईस्ट में आने के, लेकिन आप अपने में ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट इवन विद इन वन ओन ट्राइब. तो एलिन, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस एक दो चीज मैं कहना चाहूंगी, और ये अगेन क्रिश्चियनिटी हमारे एरिया में भी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उस ग्रेटर झारखंड एरिया में क्रिश्चियनिटी काफी है. उसमें जो चीज बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखाई देता है वो ये है कि जो सरना जो प्रैक्टिसेस है उसको किस तरीके से गलत ठहराया जाता है. उसमें मैं कई गाने ऐसे सुनी हूँ, चाहे हो सकता है उस समय में गाई भी हूँ, कि वो ये कह रहा है कि हे शैतान, तुमको कौन सेवा करेगा क्योंकि तुम क्या कहते हैं मुर्गा का सर खोजते हो, इस तरीके. तो ये कहीं ना कहीं ये कह रहा है क्योंकि सरना के जो प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे क्या कहते हैं
मुर्गा का चाहे मुर्गी का सर दिया जाता है। तो उस तरीके से, और फिर आप एक समाज में हो तो वहां पे हालांकि सरना लोग भी रहेंगे, क्रिश्चियन लोग रहेंगे, साथ में रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है वो हमेशा डोमिनेंट रहती है उसमें। ये जय यीशु कहना, मतलब हर लोगों को जय यीशु कहना पड़ता है। हालांकि अब ये परिस्थिति नहीं है, अब काफी कॉन्शियस हो गए हैं, लोग जान रहे हैं। तो ये है, शादियों में अगर क्या कहते हैं, लड़की और लड़का उनमें से एक जन सरना है, तो अगर क्रिश्चियन है तो लड़का को भी क्रिश्चियन होना होता है, लड़की को तो वो ऑटोमेटिकली सोच लिया जाता है कि नहीं नहीं वो क्रिश्चियन हो जाती है उस तरीके से। और क्या कहते हैं, हिंदू जब आरएसएस और वहां पे बहुत सारे ऐसे शिशु मंदिर स्कूल्स खुल रहे हैं जिसमें सनातनी सरना एक है, इस तरीके की बात हो रही है। वहां पे लिंचिंग भी हो चुका है, क्या कहते हैं ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरिया में, क्योंकि वहाँ के लोग बीफ खाते हैं। तो इस तरीके से हो रहा है, इम्पैक्ट तो है ही। और जिसको मैं पहले से ही बात की हूँ, किस तरीके से कल्चरल चीजों के ऊपर में इसका प्रभाव पड़ रहा है। आप सरना लोगों को क्या कहते हैं, उनको नीच समझने लगते हो, नहीं नहीं इन लोग तो ऐसे ही हैं, इन लोग तो जंगली है। तो ये सब चीजें कहाँ से आ रही है? कहीं ना कहीं आपको क्या कहते हैं, सिविलाइज्ड बनाने के प्रोसेस में आप ऐसे सोच उनके दिमाग में डाल दिए हैं। तो ये है। और शिक्षण संस्थानों में भी उनका ही ईसाइयों का दिखता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप एक बहुत ही प्रोमिनेंटली देख सकते हैं, लेकिन सटल तरीके से भी बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर हो रहा है। धन्यवाद एलिन, मैं इसको जल्दी से ट्रांसलेट कर देता हूँ अब। तो what Elin said is that very much like the Northeast, there is also a dichotomy between Christians and the non-Christians in the central Indian belt. So, for instance, there's a lot of tension between Sarnas and Christians, and Sarnas are often looked down upon as inferior people to the Christian tribe, and that often gets reflected in various social events such as marriage or education or even for that matter political events. तो ये आई थिंक जो डाइकोटमी जो ये जो रिलीजियस सेक्ट्स लाया गया है ट्राइबल सोसाइटी के अंदर में, ये भी एक काफी एक बड़ा चैलेंज है to tribal societies across the country. I mean, the context might be different in Northeast and Central India, but I'm also seeing a sort of a common thread which is also running across these issues. So I think this is also one of the challenges that we face as tribal societies. ये एक काफी बड़ा चैलेंज है जो हम एक आदिवासी समाज के हिसाब से हम उसको फेस करते हैं. So अभी I don't see any more questions in the chat box. So अगर किसी के पास question है तो वो अभी डाल सकते हैं. But I'll just give my sort of a final reflection before I hand it over to the speakers for the last comments and observations जो एक मिनट मिलेगा उनको. तो मुझे मेरे लिए पर्सनली ये काफी एजुकेशनल सेशन था. मतलब काफी लोग हम जो 4 स्पीकर्स थे हमारे साथ, for them with them I learned a lot. जो भी कि there were very disparate issues which were covered of among all the 4 speakers. One thing I also realized कि अगर हमने जो थीम लिया था revolutionaries among Adivasis, वो भी उस समय में काफी diverse थे, and today if we look at today's issues वो भी बहुत diverse हैं. So there cannot be one common solution. Maybe there can be a common theme, but हमारे अपने context में हमको वो issues को solve करने हैं, and it's often the
community which needs to come forward as one voice. ये एक individual struggle नहीं है. This is not an individual struggle. It's often a sort of a community struggle. And even within that, we find that although there are so many differences that come across, be it language, religion, various religious sects, we need to, as at some point, we need to take a step back and in a way try to overcome these problems. Because there are always larger issues of cultural appropriation, of land alienation. आपका जमीन हड़प लेता है आप और आपको स्थापित कर देते हैं. So these are larger issues that often affect us, and इसको we should not be trapped in what I consider to be sort of a second level issue. There are of course these issues are serious, but we need to sort of think on a much more deeper level and try to overcome that. And this is, I think, the challenge that is there in front of our generation and also for our future generation. So we are here because our forefathers and our revolutionary people had fought for us. They gave us certain rights. So I think it is our responsibility to carry that forward so that the next generation doesn't face the kind of problems that we are facing. And let's make the life better for the future generation. जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हमें लड़ना है, ताकि जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने इतना लड़के हमको इस प्लेटफॉर्म ये प्लेटफॉर्म दिया है, हमने हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा. So with that note, I would like to end from my side and just have a quick round, एक minute का, from all the speakers on their final reflective notes, and then I'll hand it over to Shiva. So I'll begin with Sushma. Sushma, if you can give your final comments and your thoughts. You have to unmute. I think I will have to take more than 1 minute to conclude, if that's a concluding remarks. Yeah, I mean, you can just give a sort of a very succinct, I mean, whatever your observations and reflections, I mean, whatever you have. About the entire session, or do you want me to conclude with my topic? About, it can be your topic, or it can be the larger observations which you had, whatever you would want to say in these final comments, like in these final closing comments. Yeah, okay. So see, one basic thing I was thinking about is about the issue of autonomy and about the issue of displacement. So basically, because I would be probably speaking from a legal perspective, so I would be speaking about the autonomy. So autonomy is not just it's not just like a it's not a political right. It's also like a cultural, moral cultural right. For example, the Niyamgiri case. If you have gone through the case of the Niyamgiri Hills and all, it's concluded that saying it's not a mere political right, but it's also a cultural right, somewhere for the indigenous people or somewhere for the Adivasi people. Because in the broader aspect, we are all somewhere intersecting autonomy with environmental justice, right? So see, it's even the environmental justice movement intersects with the cultural movements, needless to say. And second thing I wanted to speak is about the displacement in the context of not development, but there is a classic case of there is a political regionalization going on, right? Odisha, we say Madhya Pradesh, we say Telangana, we say Andhra Pradesh. But there is a proposal for Gondwana. See, this is probably a political entity that we aspire for to assert our political autonomy, probably, or the cultural autonomy. But right now, we have all the pseudo regionalizations. So because the place where I come from, Bhadrachalam, right now it is in Telangana. But most of the cultural ties would be with the Adivasi people from Andhra Pradesh. So this is like a political dilemma. Most of you have read Manto stories, right? It's almost like that. So these are the fictional boundaries, I say. So somewhere we have to not to integrate ourselves, not to create a larger entity that could, that could probably swallow the individual, swallow the nuances of the identities. But somewhere we'll have to, wipe away these artificial boundaries, and we need to assert ourselves through Gondwana region, or could be some other political assertion.
This is otherwise, see, there are forced displacements. We see forced displacements. There are Koyas from Chhattisgarh state right now who cross the river and enter Telangana and Andhra Pradesh. Now they give a different name to those Koyas and they call them Guti Koyas. And they say they are not the people who belong to Telangana and Andhra Pradesh, and they deny their basic right of entitlement to a caste certificate. This is what happens if we say migrations are not normal. And if you were to say Adivasi people are very much organic to a very particular place, no. The Adivasi people, the indigenous people are across the Indian subcontinent, we say peninsula or whatever, they're across. Okay, these are the boundaries that we need to decide, and these are the assertions that we need to make. And secondly, I'll just wrap it up. Just give me a minute, okay? Secondly, I have a problem with the anthropological characters defining tribe, the geographical isolation, the shyness, the backwardness, the economic backwardness, and all. I think somewhere we all have to say that we should be identified with the term autonomy. We should be identified with the term, what do you say? Not much of a dignity, but somewhere the egalitarian societies, because with the influence of the other moralities, we say, not just religions, but with other moralities, we have lost somewhere the sense of equality. We have somewhere lost the egalitarian morality, and we're traveling towards regressiveness. So if you kind of redefine our anthropological characteristics, probably it will be a signal to even to the community that we need to go back to our own value-based system, which is more humane. Yeah, that's my conclusion. Fantastic, thank you so much. रोहित, आप अपने कुछ रिफ्लेक्शंस रखना चाहते हैं हमारे सामने? आज जो पूरा प्रोग्राम हुआ उसके बारे में, जो आपके साथ जो 3 और स्पीकर्स थे उनके बारे में कुछ सोच है, कुछ रिफ्लेक्शन? जी बिल्कुल। जो पूरी जो बातचीत सुनने के बाद में अगर मैं कम शब्दों में कहना चाहूंगा तो एक सीधी सी चीज यह है कि जो आदिवासी जो संस्कृति और जीवन शैली है उसके ऊपर बाजारवाद और जो मुख्य धर्म है उसका सीधा प्रभाव पड़ा है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि जहाँ तक जैसे हमारे जैसे जो भी आदिवासी युवा जो है, अगर आदिवासी अधिकारों की बात करते हैं, आदिवासियत की बात करते हैं, या फिर आदिवासी की संस्कृतियों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी तरीके से कम्युनल हो रहे हैं या फिर किसी तरीके की कट्टरता या धार्मिकता फैला रहे हैं, ये वाला मकसद नहीं है कभी भी। क्योंकि हमारा जो मकसद है वो कभी भी किसी के प्रति नफरत फैलाना नहीं है। हम लोग जो है, जो भी हमारी कम्युनिटी है, वो केवल उतना ही मांग रहे हैं जितना क्या है कि संविधान में हमारे लिए आरक्षित है, और इसके सिवा किसी तरीके का कोई किसी भी समाज से कोई द्वेष नहीं। आदिवासी समाज आज तक पहले भी नहीं रखा था और आगे भी नहीं रखेगा और वर्तमान में भी नहीं रख रहा है। तो एक सीधी सी चीज यह है कि एक जो बाकी लोग जो भी हो, जैसे आदिवासी सामाजिक संगठनों का जो दुष्प्रचार किया जाता है आजकल, तो वो वाली चीजें क्या है कि बंद होनी चाहिए। क्योंकि हमको हम जो भी है हमारे क्षेत्र से किसी भी जो मुख्य धारा के लोगों के या गैर आदिवासी व्यक्ति है, तो उसको किसी तरीके से हटाने या भगाने की साजिश नहीं कर रहे हैं, ठीक। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी गैर आदिवासी संगठन है या अन्य धर्म के लोग हैं, अगर वो आदिवासी क्षेत्र में काम करना चाहते हो, अगर उनके डेवलपमेंट के लिए, तो उनका स्वागत है। लेकिन स्वागत का मतलब ये नहीं है कि जो हमारा जो मूल आदिवासी दर्शन है उसको ही बदल दो, ठीक है। क्योंकि एक चीज है कि जो आदिवासी जो संस्कृति है और परंपरा है और इसके जो संपूर्ण रीति रिवाज है, वो सारे की सारे क्या है कि जो प्रकृति है और प्रकृति की जो प्रत्येक वस्तु है उसके आसपास ही घूमते रहते हैं। आदिवासी समाज जो है हर चीज के अंदर आस्था रखता है। तो एक तरीके से अगर इस पर्यावरण को संरक्षित करना है तो जो आदिवासी दृष्टिकोण है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जो हमारी जो जीवन शैली है वो एक तरीके से सामाजिक जीवन शैली, हम लोग गाएंगे तब भी साथ में गाएंगे, जैसा कि मैडम ने अभी बताया है, नाचेंगे तब भी हम लोग साथ में ही नाचेंगे, और लड़ेंगे तब भी एक साथ मिलकर लड़ेंगे। और इसके अलावा अगर किसी तरीके का अगर दुख दर्द या पीड़ा होगी तो उसमें भी पूरा की पूरा जो हमारा जो आदिवासी समाज है वो एक साथ मिलकर उस दुख में भी भागीदार रहता है।
तो एक तरीके से ये जो सामाजिक जीवन शैली है वो सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली हो सकती है, क्योंकि जो सामाजिक जीवन शैली है वहां पर एक तरीके से जो व्यक्तिगत लालच है कि मेरी संपत्ति, मुझे पैसा कमाना है, और इसके अलावा जो है एक तरीके से मेरा क्षेत्र, तो वो वाली जो भावना है वो कभी भी हावी नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा कि जो संसाधन है उसका जो दोहन है उसके ऊपर भी हम लोग क्या है काफी हद तक क्या है रोकथाम लगा सकते हैं। जैसा कि अभी जो पूरा ही पूरा निष्कर्ष निकला उसमें मैं ये सोचता हूँ कि जो मुख्य धारा के प्रभाव में आने के बाद जो है आदिवासियों का जो सामूहिक जीवन है वो क्या है एक तरीके से खत्म हो गया है, और वो जो व्यक्ति है वो क्या है तक तक जो आदिवासी है वो भी मुख्य धारा के समाज की तरह सोचने लगा कि वो भी ज्यादा से ज्यादा संपत्ति बनाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है क्या है कि अपने घर में भी बंगला हो, गाड़ी हो, इस तरीके की सोच रखने लगा है। तो इसकी बजाय जो है क्या है कि इसके लिए जो मैं कहना चाह रहा था कि इसके लिए वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अपने पास इकट्ठा करने के चक्कर में वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्या है संसाधनों का दोहन करेगा, वो अपने से कमजोर व्यक्ति को दबाने की कोशिश करेगा वो, और इसके अलावा उसको जो है एक तरीके से जो जितने भी उल्टे सीधे जो भी हथकंडे हो सकते हैं वो अपनाएगा। तो जिससे क्या होगा कि भविष्य में जो है हमारे जो संसाधन है, हमारी जो प्रकृति, इस पृथ्वी के जो अस्तित्व है उसको ही खतरे में डाल देंगे। और हम लोग जो जैसे कि हमारे जो आदिवासी क्रांतिकारियों ने और जो बाबा साहब ने और इसके अलावा जो तमाम जो बुद्धिजीवी और बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने और दार्शनिक ने जो सपना देखा है कि जो भारत में रहने वाला जो प्रत्येक नागरिक है वो सामाजिक, आर्थिक और न्याय की दृष्टिकोण से समान रहेगा, तो वो वाली जो संकल्पना है वो कभी वास्तविक धरातल पर उतर नहीं पाएगी। तो इसके लिए जो है अगर आदिवासियों का विकास करना है तो कीजिए, बिल्कुल उनके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कीजिए, आप शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, और इसके अलावा जो है क्या अस्पताल वगैरह है और जो भी बेसिक नीड्स है वो प्रोवाइड कीजिए, लेकिन उनकी जो विचारधारा है और इसके अलावा जो क्या बोलते हैं उनका जो मूल दर्शन है उसमें बदलाव नहीं कीजिए। तो इसी के साथ मैं जो अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, और जो भी सभी साथियों को, सभी पैनलिस्ट को और इसके अलावा इस मंच को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ पर बात रखने के लिए एक अवसर दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जोहार, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। कभी would you like to give some final reflective thoughts? I received the question. So okay, I think we are getting little because we are also falling short of time. So I think it's better. I think we can, if people want, they can email the question to you. So I think you can give your final comments. Yeah. So I think the biggest problem that we tribals face in this country today, or anyone else who is not in the majority for that matter, is that our realities are not getting acknowledged while they are pushing something down our throat, right? So for example, like the Mon incident that happened last year in December, like people were killed, but then when I came to mainland India, I tried to have a discussion with the people I know, and like out of 5-6 people I talked to, one of them was a little bit updated about the thing. So now it's like they have control of the mass media, they have control of the narrative. So now it feels quite like, to be honest, it feels quite hopeless, and it makes us feel quite timid as well. And I think that's all because of the ignorance that runs in this country. And RSS, parties like RSS really thrive when there is ignorance among the mass. So I think the first thing we can do is, you know, so for example, I will not go with examples, but then there are, believe me or not, there are Bhakt Nagas now. And just imagine Bhakt Nagas, because these
their own grandparents, their own relatives, the people they know have been raped. People who were their relatives have been killed by the same system that they are supporting and giving their lives for. So now that is something I'm still trying to grapple my head around. And then, so like, I think this is coming because they have removed our history and then indoctrinated us with a certain narrative. Right. So, and like, I think the Indian state have learned this the hard way, that you cannot kill a movement with guns. The best way to handle it is poison them with education. Then it will lose effectiveness, with time. It takes a lot more time, but it's effective. And I think that's the strategy they're employing wherever there are tribes and wherever the tribes are raising any issues. Yeah, so I think at this point, what we as tribals can do is do our best to keep that narrative alive. Because if we are unsuccessful in making it out with our narratives and the sort of narrative the Hindutva agenda really do push, and to be honest, we don't have the resources, we don't have the influence, we don't have control of the narrative. So, and the way it's moving forward, the way people are getting affected, people are buying into the idea, it really puts all of our future and ours to choro matlab, like the people that comes after us, our whole future is, I see it in very grave danger. So the least we can do right now, and I think it's the most crucial thing we should be doing, is to ensure that our narrative survives, so that they don't wipe the hours of their sleep. So I think that's all I can say for now. Thank you so much. Hi everyone. Nice to meet you. Yeah. Thank you, Kabithui. It's a very important point which you have raised. I think to keep our narrative alive is the biggest struggle, and I think we should all be focusing on that. Elin, आखिरी बात आपके साथ. तो मुझे लगता है ये हमारा जो सेशन रहा है काफी एनरिचिंग रहा है, और मैं इसको एक मौका की तरह देख रही हूँ राष्ट्रीय स्तर में. और एक रिक्वेस्ट है NAPM के साथ में, और हम भी इसी के पार्ट हैं, तो भी कि साथियों, ये हसदेव का जो आंदोलन है ना, और फिर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का जो आंदोलन है, ये दोनों बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेज में है. लोग लड़ रहे हैं. मुझे लगता है उनके सॉलिडारिटी में कुछ तो हमें करना चाहिए. वो मैं कहना चाहूंगी. कल एक ट्विटर स्टोन है उसका, हसदेव का, अगर आप लोग हैं तो प्लीज साथ दीजिएगा, उसमें हम साथ में करते हैं. दूसरा पूरा एक इस सत्र के बारे में अगर मैं बोलूं तो बहुत ही एनरिचिंग रहा, ज्ञानवर्धक रहा. एक हालांकि हम जानते हैं, फिर भी सबके साथ मिलके एक क्या कहते हैं, पावरफुल होने का मुझे लगता है महसूस हुआ मुझे. तो हम जरूर साथ लड़ेंगे. और क्या कहते हैं, ये जो बड़ा जो व्यवस्था बन रही है, बनाई गई है और हावी हो रही है, इसको मुझे लगता है हम युवाओं को बहुत ही कॉन्शियसली एक साथ आके काम करना पड़ेगा, ताकि आगे हम उस दिशा में ना जाएं जो एकदम विपरीत है आदिवासी दर्शन का, जिसको क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं. हम एक आदिवासियत जो दर्शन है, दृष्टिकोण है, उसको हम बरकरार बनाए रखें. और इसी में जैसे वो भाई बता रहे हैं कि पर्यावरण को अगर हम सुरक्षा कर सकते हैं, तो हमारा विचारधारा जो है यही एक रास्ता हो सकता है. तो हाँ, धन्यवाद आप सभी को. जोहार, जिंदाबाद.
धन्यवाद मीरा। थैंक यू सो मच एलिन। और मैं अभी माइक हैंड ओवर करूंगा शिवा को, और शिवा हम एक फाइनल कंक्लूजन कर देते हैं, हम लोग इसको आज के लिए wrap करते हैं। थैंक यू। टेक्स ओवर। ये जो पोस्टर आपको दिख रहा है अभी एलिन ने जो बताया, ये कल शाम को है ट्विटर स्टॉर्म को। जो भी साथी इसमें शामिल होना चाहते हैं प्लीज शामिल होइए। NAPM के पेज पर भी हम इसको अपलोड करेंगे, तो प्लीज डू एक्सप्रेस योर सॉलिडारिटी। और वो वीडियो शिवा कब दिखाएं? अभी दिखाएं? हाँ, हम एलिन का वीडियो भी एक बार शेयर करने की कोशिश कर सकते हैं दोबारा, उसी से एंड कर पाए तो बढ़िया रहेगा। एक बार ट्राई कर लें। आप मुझे बताइए कि साउंड आ रही है। हाँ, थैंक यू मीरा फॉर शेयरिंग दैट। मुझे लगता है ये आई थिंक परफेक्ट तरीका था इसको ख़त्म भी करने का, क्योंकि जैसा एलिन ने कहा कि ये एक कलेक्टिव स्ट्रगल्स होते हैं और आइडेंटिटीज़ के अपने नुआंसेस के बावजूद लोगों के साथ आने से ही ये सभी स्ट्रगल्स बनते हैं। तो and that is what is visible in today's dialogue also. While there are very very peculiar contextual realities to whatever each of the speakers spoke, there are certain binding threads, certain certain realities running across borders. तो वो जो सिमिलर रियलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं सॉलिडारिटी का एक बेस बन सकती हैं, और उसी के साथ साथ लेकिन हमको कंटेक्चुअल जो रियलिटीज़ हैं, जो नुआंसेस हैं, उनको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ताकि हम एक ज़्यादा सेंसिटिव और एक ज़्यादा रैडिकल ऑल्टरनेट के बारे में सोचते रह सकें। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू अगेन वंस अगेन एक्सटेंड माई थैंक्स टू ऑल द स्पीकर्स, काबी, रोहित, एलिन एंड सुषमा, and also Dr. Ashish for very beautifully binding the discussion together. So once again thank you to all of you. और आप सभी लोग हमारे साथ आगे के सेशंस में भी बने रहें। इस पूरा महीना आगे 2 सेशन और होंगे जिनमें हम फिर से कुछ और रेवोल्यूशनरीज़ की बात करेंगे और देखेंगे कि उनके विचार कैसे हमारे लिए आज भी एक इंस्पिरेशन का बेस बने रह सकते हैं। तो वंस अगेन जो सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनका धन्यवाद। जिंदाबाद, जोहार, जय भीम। थैंक यू।